In this lesson, I'm going to start discussion on verb in relation to time. As we have seen that verb is used either with reference to time or without reference to time. When, for example, in imperative sentences, when we are giving instructions like utho, baitho, khao, piyo, likho, dekho, here we are not relating it with time. Today we will see that how the verb is used with present tense, past tense, and future tense. My focus in this lesson is the present tense, and within present tense, present indefinite tense. There are four types of sentences that we can use in present tense. One is present indefinite tense, second present continuous tense, then present perfect tense, and present perfect continuous tense. So let's start our discussion with present indefinite tense. So fail mean verb. इस्तेमाल वक्त के लिहाज mean with reference to time, वक्त के लिहाज से, and we are starting with the present indefinite tense. Let's pick one verb. So mean sleep, and when we are using it as to sleep, so the infinitive form is sona. In both cases there is no indication about time, but when we are relating it with time, especially in the present indefinite tense, present indefinite tense covers those sentences which are explaining a routine or habit of a person. When we will use verb in present tense, so we will replace this noon alif na with te alif ta if it is male single, te yati if it is female singular, or te yate when it is plural. And we know that present mean maujood, and in present tense we use hai, hain, hoon, or ho. So if I'm saying ta, we'll use hai, ta hai, ti hai, te hain, or we can also say te ho, especially when we are using it with tum. So when we are making sentence in present indefinite in Urdu, we will replace this noon alif na with te alif ta. So when we will use te alif ta with seen vav so, it will become sota, and then hai, sota hai. For example, he sleeps. And then if it is female, she sleeps, soti hai. Likewise, they sleep, sote hain. I sleep, sota हूँ. You sleep, आप सोते हैं. So we'll say सोते हैं. और तुम सोते हो, again you sleep, तुम सोते हो,
So you can say sote ho. So at first place you have to understand ta hai, ti hai, te hain, and te ho. Whenever we are using verb in present indefinite tense, we will complete our sentence with words like hai, and whom, and we will add te alif ta, te ye ti, te ye te with the initial form of verb. We can see few more examples. Look at this verb, it is go. So go will become jata hu. To go means jana, and it will become jata hu. Here after jim alif ja we have attached te alif ta. So jata hu mean when I'm saying I, मैं जाता हूँ. Now मैं जाती हूँ, if it is female, मैं जाती हूँ. If it is male, मैं जाता हूँ. आप जाते हैं mean you go. जाते हैं, because when we are using आप, we convert the verb into plural form. तुम जाते हो, like here, तुम जाते हो. This is the informal way to talk to someone, and in a formal way or respectable manner we'll say आप जाते हैं. Then for he goes, वो जाता है. She goes, वो जाती है. So here we have जाता हूँ, ता हूँ, जाती हूँ, see here ती हूँ, then ते हैं, then ते हो, then ता है, then ती है. Similarly, to run mean दौड़ना. So from दौड़ना, the initial form is दौड़, दाल वाव रे दौड़, and we attach te alif ta in present indefinite tense. मैं दौड़ता हूँ, I run, मैं दौड़ता हूँ. I run female, मैं दौड़ती हूँ. We run, हम दौड़ते हैं. You run, आप दौड़ते हैं. You run, तुम दौड़ते हो. He runs, वो दौड़ता है. She runs, वो दौड़ती है. So here दौड़ता हूँ, दौड़ती हूँ, दौड़ते हैं, दौड़ते हो, दौड़ता है, दौड़ती है. Likewise, to write, लिख, it becomes लिखता हूँ, लिखती हूँ, लिखते हैं, लिखते हो, लिखता है, लिखती है. I write, मैं लिखता हूँ. Female, I write, मैं लिखती हूँ. We write, हम लिखते हैं. और you write, आप लिखते हैं. Again you write, आप लिखते हो. मैं, वो लिखता है, he writes, वो लिखती है, she writes. Then to come, initial form is a, alimada a. Alimada a mean to come, ana. So but we will not say ana, we will replace noon alif na with te alif ta. Aata. I come, मैं आता हूँ. I come, female, मैं आती हूँ. आता हूँ, आती हूँ. Then plural form आते हैं, आते हो. We come, हम आते हैं. You come, आप आते हैं. You come, आप आते हो. और तुम आते हो. आता है, he comes. She comes, वो आती है. So these are the different examples. Now I have picked one verb which is jana, to go, and the object I have picked, it is school, go to school. Now before I go further, this is important to understand the second rule that we will use in Urdu sentences, and this rule is the structure of sentence. For example, in English, structure is subject, verb and object. In present indefinite tense, I
I go to school. So here school is object, go is verb, and I is subject. So fa'il, fail and maf'ul. When we are using this structure in Urdu language, the structure is different. We'll first use the subject, but then object is on the second place and verb is on the third place. And it will be subject in I will come here, to school will come here at the second place, and go on the third place. And you know what is the Urdu of I? It is main. School, alif, sin, kaf, waw, school, a school. And then go, because it is in the present indefinite tense, so we'll say jata hu. Hu is because of मैं, if it's मैं हूँ, we हम हैं, you तुम हो, या you आप हैं, he is वो है, she is वो है, they are वो हैं. So here this who is due to मैं. So मैं school जाता हूँ. So in Urdu we write from right to left. So we'll say मैं subject, then object, मैं school, then verb जाता हूँ. You can also bring to in Urdu sentence, मैं स्कूल को जाता हूँ. In English the convention is we say I go to school, but in Urdu the convention is I go school. Like मैं स्कूल जाता हूँ. And to or ko we will use only at that time when it is necessary to point out the direction. For example, there are two places in one direction, like one is school and other is a cafeteria. If I am emphasizing that I'm not going to cafeteria, I'm going to school, so I will say I go to school and I'm not going to cafeteria. So in this type of sentence we can use मैं स्कूल को जाता हूँ. So the convention is I go to school, मैं स्कूल जाता हूँ, हम स्कूल जाते हैं, तुम स्कूल जाते हो, आप स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाती है, वो स्कूल जाते हैं. And there is no harm if I'm saying मैं स्कूल को जाता हूँ, हम स्कूल को जाते हैं, वो स्कूल को जाते हैं. But the efficient is if I say मैं स्कूल जाता हूँ. So first of all, let's see the simple sentences. Simple sentences mean without not and without question mark. So here I go to school, मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल को जाता हूँ. We go to school, हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल को जाते हैं. You go to school, आप स्कूल जाते हैं या तुम स्कूल जाते हो. आप स्कूल को जाते हैं, तुम स्कूल को जाते हो. So you can use either form. You go to school, आप स्कूल जाते हैं. He goes to school, वो स्कूल जाता है या वो स्कूल को जाता है. या मीन और. She goes to school, वो स्कूल जाती है और वो स्कूल को जाती है. वो स्कूल जाती है या वो स्कूल को जाती है. अहमद goes to school, अहमद स्कूल जाता है
या अहमद स्कूल को जाता है। दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं, वो स्कूल को जाते हैं। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। सो आफ्टर ऑब्जेक्ट we are going to apply nahi, but in English we will add do not or does not. So I do not go to school or I don't go to school, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। We do not go to school, हम स्कूल नहीं जाते हैं। You do not go to school, आप स्कूल नहीं जाते हैं, तुम स्कूल नहीं जाते हो। Likewise he doesn't go to school, he does not go to school, वो स्कूल नहीं जाता है। She does not go to school, वो स्कूल नहीं जाती है। Ahmed does not go to school, अहमद स्कूल नहीं जाता है। They do not go to school, वो स्कूल नहीं जाते हैं। Interrogative sentences where we have question. Do I go to school? क्या मैं स्कूल जाता हूँ? So we'll just simply add क्या in the beginning. क्या mean what? But here in English it is do I go to school mean question. क्या मैं स्कूल जाता हूँ? Do we go to school? क्या हम स्कूल जाते हैं? Do you go to school? क्या आप स्कूल जाते हैं? Does he go to school? क्या वो स्कूल जाता है? Does she go to school? क्या वो स्कूल जाती है? Does Ahmed go to school? क्या अहमद स्कूल जाता है? Do they go to school? क्या वो स्कूल जाते हैं? Sometimes we have both negative and interrogative sentences. For example, do I not go to school? क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? Mean you are asking the question. Do we not go to school? क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं? Do you not go to school? क्या आप स्कूल नहीं जाते हैं? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? You can also say क्या आप स्कूल नहीं जाते हो? Does he not go to school? क्या वो स्कूल नहीं जाता है? Does she not go to school? क्या वो स्कूल नहीं जाती है? Does Ahmed not go to school? क्या अहमद स्कूल नहीं जाता है? Do they not go to school? क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं? So in present indefinite tense we have learned that we apply ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ता है, ती है in the end of the sentence. And indefinite mean something which is continuous in present and it is your routine, it is your habit. For example, you daily go to office, you daily go to university, you read the book, so something which is your routine. So I would advise that practice with all these verbs and the verbs you have studied in the previous lesson for all the pronouns, as we have practiced for jana mean go, like I go to school, I do not go to school, do I go to school, do I not go to school, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ. And similarly हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं, क्या हम स्कूल जाते हैं, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं. आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल नहीं जाते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप स्कूल नहीं जाते हैं. वो स्कूल जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है, क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो स्कूल नहीं जाता है. वो स्कूल जाती है, वो स्कूल नहीं जाती है, क्या वो स्कूल जाती है, क्या वो स्कूल नहीं जाती है. सिमिलरली विद दे, वो स्कूल जाते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं, क्या वो स्कूल जाते हैं, क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं. You can practice with all the pronouns with other verbs. I can give you one more example with दौड़ना, to run. I run, मैं दौड़ता हूँ. I do not run, मैं नहीं दौड़ता हूँ. Do I run, क्या मैं दौड़ता हूँ,
डू आई नॉट रन, क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ. विद वी रन, हम दौड़ते हैं. वी डू नॉट रन, हम नहीं दौड़ते हैं. डू वी रन, क्या हम दौड़ते हैं. डू वी नॉट रन, क्या हम नहीं दौड़ते हैं. लाइकवाइज यू रन, आप दौड़ते हैं. यू डू नॉट रन, आप नहीं दौड़ते हैं. डू यू रन, क्या आप दौड़ते हैं. डू यू नॉट रन, क्या आप नहीं दौड़ते हैं. फॉर ही रन्स, वो दौड़ता है. ही डज नॉट रन, वो नहीं दौड़ता है. डज ही रन, क्या वो दौड़ता है. डज ही नॉट रन, क्या वो नहीं दौड़ता है. शी रन्स, वो दौड़ती है. शी डजंट रन, वो नहीं दौड़ती है. डज शी रन, क्या वो दौड़ती है. डज शी नॉट रन, क्या वो नहीं दौड़ती है. दे रन, वो दौड़ते हैं. दे डू नॉट रन, वो नहीं दौड़ते हैं. डू दे रन, क्या वो दौड़ते हैं. डू दे नॉट रन, क्या वो नहीं दौड़ते हैं. लाइकवाइज यू कैन डू द प्रैक्टिस विद लिखना. लाइक मैं लिखता हूँ, हम लिखते हैं, तुम लिखते हो, वो लिखते हैं, वो लिखता है, वो लिखती है, वो लिखते हैं. लाइकवाइज इसी तरह आता हूँ, आती हूँ, आते हैं. So that's all in this lesson. In the next lesson we will discuss about the present continuous tense. Thank you very much.